topic is about different lay beliefs related to health conditions and related to different illnesses in our society. But first, we need to confirm what are the different stigmas and what are the different beliefs that are created in our society and that have a strong impact and influence on our health conditions. So, there are different definitions related to lay beliefs, but the most important one include lay beliefs are likely to be influenced by individual culture and hence also by ethnic group. So basically, lay beliefs are just like it is a sort of a thinking pattern in which we use to understand the patient belief, the researcher or clinician observe the patient culture from clinician's own perspective. So, in this way, in order to understand the patient's belief, it is very important for health professional to understand, to observe the patient culture, to understand their health condition and to understand their perception from the professional perspective. सो ले बिलीव कुछ ऐसे फॉल्स और कुछ ऐसे फिक्स बिलीव्स होते हैं मोस्टली दे आर नॉट रॉन्ग बट समटाइम्स अकॉर्डिंग टू अवर कल्चर इन अवर डिफरेंट social environments in different backgrounds in different arenas different lay beliefs are created. So if we want to understand, if a health professional want to understand someone's lay belief, they need to understand their culture, they need to understand the environment in which they are having these sort of lay beliefs. So, what are different lay beliefs? So, lay belief can be defined as the common sense understanding and knowledge about health or illness. So, in any society, if we want to understand what is meant by lay belief, so it is generally called as the understanding or the knowledge about any kind of health or any kind of illness. Health is medically described, while illness is basically described in different societies and different cultures. So it is rooted in our own experiences. Sometimes, just because of our own experience, certain lay beliefs are created. So it doesn't mean that they are all the time they are wrong. So they are not necessarily wrong. Where do patients get lay belief from? So, if the question arises that where do patients just get lay beliefs from? So, they get lay belief from different cultures, from different backgrounds, environments, and from different societies. So, personal knowledge is the first point that if we are gaining certain kind of knowledge and we are having that, so we are creating lay belief about certain illnesses. Previous medical encounters means that if we have experienced certain health conditions, so our lay belief or belief about that specific illness is created or conditions related to it. Folk knowledge, different sort of knowledge that we gather from it and we gather about that specific condition. Media or internet also plays an important role and also had a great impact on a person's mindset because sometimes media or internet is spreading such awareness related to health condition and sometimes it has an adverse effect as well, such as uh, severe conditions are just associated with minor symptoms. For example, according to social media, if someone gathers knowledge about flu, that if someone gets flu, they may it may cause death. So, spiritual beliefs are created and accepted in certain cultures, in certain societies. So, according to that, they used to diagnose and they used to treat certain health conditions.
Final one is alternative or complementary medicine. So, according to different cultures and according to different environments, people living in those and following those cultures, customs, and traditions, and their own beliefs within that specific culture. So, they generally avoid certain medical treatments by health professionals and they used to take the alternative or complementary medicines for that. For example, homeopathic medicines. So different sort of alternative medicines are taken according to their own beliefs. So, lay beliefs are why they are so much beneficial and why might taking into account a patient's lay belief be beneficial? It is beneficial in order to understand illness related behavior. So, if we want to understand someone's illness, someone um, behavior, so we need to understand uh, the illness related behavior as well. So it is very helpful in understanding someone's behavior associated with that particular disease. Understand their needs and what are their needs and why they are behaving so, why they are doing so. Understand their expectations and what are their different expectations according to their beliefs and what do they want. uh, Patient satisfaction is important. So, in order to satisfy someone, in order to satisfy the patient, we need to understand their beliefs and we need to treat them accordingly. And final point, but the most important one, that is it is important for doctors' satisfaction because if we want our patients to overcome such health conditions in order to deal with it, so doctor satisfaction is also important. So satisfy ourselves or to satisfy health professional, it is important uh, to prepare for the task, to help such to keep these points in mind in order to understand their illnesses related behavior. So अगर lay belief को understand करना है किसी भी society या culture में, so it is important to understand someone's behavior, किसी का behavior understand करना patient का, उनकी needs, expectations, उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है और डॉक्टर्स खुद कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को लेकर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप these points in mind while we are in any healthcare setting. So, an example is given to describe someone's lay belief. किसी का lay belief क्या हो सकता है different cultures और society में, उसको understand करने के लिए कुछ example दी गई है. For example, a patient comes into for the surgery and is worried about their cough. So they are reporting, and if a professional want to understand their mindset and how they became health condition became so severe and what was the reason behind that, so they report seeing the TV ads saying if you have had a cough for more than 3 weeks you should go and see the doctor. And they worry and the patient becomes worried about lung cancer. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है, सो दे आर रिपोर्टिंग दैट दे आर वरीड अबाउट द कफ बिकॉज जस्ट बिकॉज उन्होंने टीवी एड देखी या उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से गेन की, उसके अकॉर्डिंग द कफ सिम्टम इज रिलेटेड टू द लंग कैंसर. सो ये एक बिलीफ बन जाता है, ये एक ले बिलीफ है जो उनकी हेल्थ कंडीशन को adversely affect करता है. So it is important to understand someone's mindset in order to help them cure those symptoms. These beliefs are very influential in help seeking, in patients' attitude to professional help, and manner in which patients participate is the management of their illness. In order to manage someone's illness, it is very important to understand. It is very important to help them to have
help seeking behavior. It is very important for professional help. So, for spreading such awareness, it is important to understand someone's lay belief. Clinician thus need to understand such lay beliefs in order to engage their patients in treatment and provide optimal care. So, if you want to provide them such care, we need to understand. Clinicians need to understand, and lay beliefs are likely to be influenced by individual culture and by different groups. So, we need to understand what are the different cultures in which people are creating, which people have influence on the thought pattern, and they are having such ले बिलीव्स सो कौन से ऐसे बिलीव्स हैं डिफरेंट कल्चर्स में जिनको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है और वो ले बिलीव्स अगर हम उन्हें अंडरस्टैंड कर लें तो हम पेशेंट की ट्रीटमेंट में उनको हेल्प आउट कर सकते हैं. हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस हेल्थ बिलीव्स. सो कल्चर कैसे किसी के हेल्थ बिलीव्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है. The influence of culture on health is vast. It has vast impacts. जैसे कल्चर की हमारी हेल्थ पर काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज उनकी वजह से हमारे बिलीव्स क्रिएट होते हैं. It affects perceptions of health, illness, death, beliefs about the causes of death, and approaches to health promotion. So, किसी भी कल्चर या सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ के लोगों के जो परसेप्शंस होते हैं, जो क्रिएट होते हैं, या किसी और का परसेप्शन हमारी मेंटालिटी पर या हमारे थॉट पैटर्न पर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है. सो उसकी वजह से हमारे हेल्थ, इलनेसेस, डेथ के बारे में जो बिलीव्स होते हैं, जो कॉजेज़ होते हैं कि डिजीज़ के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और हम किस तरह से हेल्थ को ट्रीट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो वो हमारे डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं. उसकी वजह से हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है. और हाउ इलनेसेस एंड पेन आर एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट कल्चर्स. सो किस तरह से उनको समझा जाता है, उनको लिया जाता है, उनके बारे में किस हद तक अवेयरनेस है और उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. So where patients seek help, the types of treatment patients prefer. So जिस तरह पेशेंट हेल्प लेना चाहेगा या वो उसको कंसिडर करेगा कि इसके लिए लेनी चाहिए हेल्प. सो इस तरह की ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स प्रेफर करते हैं कि उनको ऐसी ट्रीटमेंट्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बट दैट बिलोंग टू देम and that is greatly influenced by different cultures. Now, what is meant by illness behavior? So, illness एक social state है जिसको हम अपनी society में किसी भी तरह से define करते हैं उस disease को. It is not just a disturbance of the body, it has also social meaning and impact. ये सिर्फ disturbance की बात नहीं है कि medically or physically if we are disturbed, but it has social meaning as well. इसका impact भी है. So disease की वजह से ही, but इस disease को, इस health condition को जब society socially और culturally different factors की base पर define करती है, so that is called as illness in different societies. Sometimes distinction is made between disease. Disease is basically medical definition, and illness that is based on the layperson's perception. So they can be described as some people may they can be sick but without symptoms. Symptoms के बगैर वो उनको sick consider किया जा सकता है. They can feel ill according to their society, but there is no such disease or no such condition. So spiritual beliefs and all these beliefs comes under this category. How we can define health. So according to William in 1983, he found that lay definitions of health consist of absence of the disease. If someone, अगर हम health को define करना चाहें, so उसमें कुछ factors आते हैं जिसमें से एक ये कि हमारे
हम फिजिकली और मेंटली फिट हों, एब्सेंस ऑफ डिजीज, देयर इज नो सच डिजीज. Functional fitness, functionally we are fit, we are healthy. Health as a dimension of strength, weakness और exhaustion की बेस पर हम health को define और describe करते हैं. So अगर ये factors हैं उसके according appropriately criteria पर lie करते हैं और अगर कोई illness या disease नहीं है, so we can say the person is healthy. So definition of health vary between different societies, geographically and cultural in different culture context. But according to lay beliefs, according to lay man thinking pattern, it is important to understand the perception of the relevant disease and how to prevent that disease and how to promote such health conditions or how to spread awareness among that in that particular. Now, what are the different health beliefs? If we say that there is a definition for health, but what are the different health beliefs that affect our health? Health beliefs are what people believe about their health. जो लोग अपनी health के बारे में सोचते हैं, what they think constitutes their health and what they consider the cause of the illness. जैसे वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं और कॉज ऑफ इलनेस क्या हो सकता है, हाउ टू ओवरकम दैट इलनेस, हम कैसे उस इलनेस को ओवरकम कर सकते हैं. सो ये कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो कि कल्चरली डिटरमिन्ड हैं, जिनको हम कल्चर के अकॉर्डिंग डिटरमिन कर सकते हैं, एंड ऑल कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर हेल्थ बिलीफ सिस्टम. सो इसी की बेस पर जब हमारे बिलीव्स बनते हैं, सो दैट जस्ट फॉर्म लार्जर हेल्थ बिलीफ सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी और कल्चर का क्या इम्पैक्ट है, वी कैन सी एंड वी कैन ऑब्जर्व व्हाट आर द डिफरेंट influences just because of this upon our health. Health beliefs and lifestyle. Talking about different health beliefs and different lifestyles, sociology of health belief is of value to public health as well, because of these we can understand uh, the professional patient interaction. उनका कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए हेल्थ प्रोफेशनल्स का, पेशेंट्स का, हमें उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. सो इंसाइट प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम, ले कंसेप्चुलाइजेशन, और हमें उनके हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स मीन उनके क्यों किसी भी हेल्थ या इलनेस कंडीशन के साथ जो एसोसिएटेड बिहेवियर्स लिंक्ड हैं या उनकी वजह से कुछ फिजिकल या मेडिकल इश्यूज की तरफ वो बिहेवियर लीड कर रहा है. सो वी कैन बेटर प्रोवाइड इंसाइट इनटू ले कॉन्सेप्ट्स. अंडरस्टैंडिंग पीपल्स आइडिया अबाउट हेल्थ, के लोगों की हेल्थ के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मेंटेनेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं. Disease prevention is also very crucial to effectiveness of health promotion, obviously. Now, what is meant by illness behavior? So, as we say that illness is socially defined in different societies and cultures. So, illness behavior, we can say that only small number of people with a symptom decide to consult डॉक्टर, जनरल प्रोफेशंस एंड मैनी सेल्फ मेडिकेट. मीन्स कि कुछ लोग होते हैं जो कि डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं, लेकिन कुछ सेल्फ मेडिकेशन पर रिलाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल बिलीव्स. सो पीपल, जैसे कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज़ कर लेना. सो पीपल ऑफन डिस्कस सिम्टम्स विद अदर्स बिफोर दे डिस्कस विद द डॉक्टर्स. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ले रेफरल, क्योंकि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनसे कंसल्टेशन के बगैर, डॉक्टर्स से कंसल्ट किए बगैर वो लोगों से कंसल्टेशन लेते हैं और अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग उस हेल्थ कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. सो समटाइम्स इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स देयर हेल्थ कंडीशन, जिसकी वजह से वो टाइम पीरियड प्रोलॉन्ग होता है और उनकी हेल्थ कंडीशन मज़ीद सिवियर हो जाती है.
Lay referral network, in according to Fridson in 1960, was defined as patient experiencing symptoms would receive advice from close relative before being referred to more remote and expert people. So वही बात के हम expert people से एडवाइस लेने की बजाय उन लोगों से एडवाइस लेते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है कि वो हमें इस डिजीज़ के हवाले से, इस कंडीशन के हवाले से एडवाइस दे सकते हैं. So, a research study was conducted, and that was done in United States among the members of lower socioeconomic status class. So, इस research study में यूनाइटेड स्टेट में जो लोग लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते थे उन पर ये स्टडी की गई जिनमें they revealed that lay concepts of illness in this group tended to have a functional basis. So, if a person was ill enough not to able to work, with medical attention be sought. So, accordingly देखा गया कि वो लोग जो कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते थे उनके कुछ ले कॉन्सेप्ट्स थे इलनेसेस के हवाले से उनकी सोसाइटी और कल्चर का इम्पैक्ट था. सो अगर उनकी कोई ऐसी कंडीशन होती सो मेडिकल अटेंशन की बजाय वो अपनी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्टन ले बिलीव्स रखते थे. सो ले कॉन्सेप्ट्स जो थे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स कैसी होनी चाहिए उस इलनेसेस के हवाले से वो बिल्कुल डिफ़र करती थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी डॉक्टर्स के कॉन्सेप्ट से. ऑब्वियसली फिर उनकी ट्रीटमेंट उनका डायग्नोसिस भी बिल्कुल डिफरेंट था. So an example from North America is commonly held belief that antibiotics are helpful in curing colds and flus. So ये एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कोल्ड्स और फ्लूज को क्योर कर सकती हैं. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं उसको फॉल्स कंसिडर करते हैं या कुछ कंडीशंस क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट होती है और उसको एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता. सो डॉक्टर्स यूजुअली डिनाई एंड रिजेक्ट दिस कंजम्पशन. This conception is usually denied by doctors. Now, when we say that different lay beliefs and false beliefs are created in different societies, so what is meant by stigma? Stigma is also sort of a fixed belief that is created in any social or cultural background, social and cultural environment. So, stigma, according to Goffman, was defined as it is the way society perceives and receives a condition. जिस तरह से हमारी society किसी भी condition को देखती है, so it varies over time between society, within societies. ये वेरी करती है डिफरेंट सोसाइटीज़ में. स्टिग्मा में कुछ ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड्स या डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं किसी की भी हेल्थ कंडीशन, मेंटल इलनेस को लेकर, डिसेबिलिटी को लेकर. कुछ हमारे ऐसे बिलीव्स होते हैं जैसे different stigmas related to boys and different stigmas related to girls. So social stigmas can also be related to other characteristics जैसे कि gender, race के हवाले से हम कैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन उनमें करते हैं, एक स्टिग्मा रखते हैं. फॉर एग्जांपल मुस्लिम कल्चर के हवाले से कुछ डिफरेंट स्टिग्मास रखे जाते हैं, कुछ डिफरेंट बिलीव्स समझे जाते हैं. डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट स्टिग्मास उनको क्रिएट किया गया है. बट ये स्टिग्मा किसी और की भी हेल्थ कंडीशन को, मेंटालिटी को अफेक्ट कर सकता है. Now, what are the different coping strategies? How to cope with these conditions? So, coping strategies depend upon the perceptions of stigmatizing condition. के perception क्या है जो stigma create किया गया society में. So, पहले तो उस perception को नेगेटिव है अगर तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना होगा और हमें अपना जो परसेप्शन है उसको ठीक करना होगा. Or only by spreading such awareness, educating them, we can help them to create the positive perceptions.
इंडिविजुअल सेल्फ वर्थ एंड पर्सनालिटी जो किसी भी इलनेस डिसेबिलिटी की वजह से सेल्फ वर्थ सेल्फ एस्टीम लोगों के स्टिग्मास जो क्रिएट होते हैं उसकी वजह से कुछ लोगों की डेवलप बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है, उनकी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय होती है। सो उसको उनको हेल्प आउट किया जा सकता है सो दैट दे कैन ओवरकम सच हेल्थ कंडीशंस and they can better deal with it. Social support system is very important to have certain coping strategies and to help them overcome such conditions. How to manage stigma? Managing stigma is very important. So, in different groups, families, employers, and over different course of illnesses. So, family can support. Sometimes family used to hide such conditions because of the fear of certain stigmas that are created by people. They like feeling associated with the stigmatizing conditions of the individual. So we can manage certain stigmas and by understanding such conditions in order to deal with it. So stigmas usually affect acceptance of the diagnosis. So people do not usually accept the fact that they are having certain mental health conditions and need to be cured, for example, certain psychological problems. So people do not want to overcome these conditions just because of different stigmas created in the society.